Good evening and welcome. I hope everything is right. देखिए, सबसे पहले क्लास बिगिन करने से पहले एक लास्ट क्लास में मैंने गलत बात बता दी, मतलब बात गलत बता दी थी। वो बात ये थी कि मैंने ये बताया था कि स्काउट बड़ी है और जेम छोटा है। दैट इज रॉन्ग। जेम बड़ा है, स्काउट छोटी है। जेम की उम्र कुछ 10 साल है और स्काउट इज ऑफ 6 years। ठीक है, तो ये बात चेंज कर लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक, बाकी इसके बाद की कहानी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड जो आज बेसिक डिस्कशन हम लोगों को करना है वो डिस्कशन है थीम्स पर, कि व्हाट आर द मेजर थीम्स इन द नॉवेल, और उन थीम्स पर किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, उन्हीं पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम लोग थीम की स्थिति। देखिए, पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन सी मेजर थीम्स हैं। थीम्स इन द नॉवेल। ठीक है, पहली थीम, एग्जिस्टेंस ऑफ गुड एंड इविल। Second thing, the importance of moral education. Importance of moral education, इसी से क्वेश्चन बना हुआ था। नंबर 3 is social class. Number 4, racial injustice. Racial injustice. Number 5, courage and compassion. Courage and compassion. Number 6, gender roles. Number 7, laws, written and unwritten. Number 8, loss of innocence. Loss of इनोसेंस। ये 8 मेजर थीम्स हैं जो कि निकल करके इस नॉवेल में आती हैं। अब इन्हीं थीम्स पर एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। एक थीम ऐसी है जिस पर अलग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो हाँ, तो देखिए सबसे पहले अच्छा, एक थीम्स डिस्कस करने के पहले एक मैं डाउट आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि कई चीजें लोग पूछते हैं कि समरी क्रिटिकल एनालिसिस एक है, या कैरेक्टर समरी एक ही है, या फिर जो थीम है वो समरी है। देखिए, समरी जो है वो कुल मिलाकर के कहानी है।
ठीक है, जो पूरी नावल की कहानी है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है नावल का, वो जो है समरी है। बात समझ आई कि नावल मान लीजिए पूरा शरीर है, तो उसके अंदर का जो स्केलेटन है वो जो है समरी है, यानी कि पूरी कहानी को आप संक्षिप्त तरीके से कह दे रहे हैं, शुरू से अंत तक, वो समरी है। और उसी समरी से सारे क्वेश्चंस के आंसर निकलते हैं। कैसे निकलते हैं वो आपको थोड़ा सा समझना होगा। जैसे मान लीजिए कि पूरा पूरा समरी आपने पढ़ा है, अभी देखिएगा उसमें से ये 8 हेडिंग्स जो मैंने लिखी हैं, 8 थीम्स जो मैंने लिखी हैं, उसी समरी से निकालूंगा मैं। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए कि किस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। जो चीज पूछ रहा है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समरी को रख दें, वही आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, और यही बेस्ट वे है ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये तो एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता कि सारी चीजें समरी हैं, लेकिन सब निकल समरी से ही रही हैं, या यूं कह लीजिए कि सभी के सभी समरी से निकल सकते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ गुड एंड इविल। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट थीम। अच्छा, सबसे प्रोमिनेंट थीम की अगर बात करें तो वैसे तो सारी हैं, लेकिन जो है लगभग 4-5 को हम लोग इसमें एकदम मेन थीम मान सकते हैं। एक तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, सॉरी, गुड एंड इविल। दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन। तीसरा सोशल क्लासेस एंड रेसिज्म। ठीक है, एंड करेज एंड कंपैशन। ठीक है, ये जो 3-4 हैं वो प्रोमिनेंट थीम है, मेन थीम। बाकी जो है वो सब थीम्स हैं सारी की सारी थीम्स यहाँ पर। अब देखिएगा मैं कैसे निकालता हूँ समरी से कहानी, समरी से आपका आंसर। पहली थीम लिखिए आपकी, द एग्जिस्टेंस ऑफ गुड एंड इविल। अब कहानी आपको पता है, पूरी प्लॉट लाइन। ठीक है, 3 बच्चे हैं, फादर हैं, कैलिफोर्निया है, एक बॉब रॉबिन्सन है, सॉरी टॉम रॉबिन्सन है, जो कि अक्यूज्ड है, एक ब्लैक मैन है। अब यहां पर गुड और इविल आप देखें तो होल कैरेक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। कैसे? वन इज इनोसेंस, वन इज गुड, द अदर इज इविल। कैसे? हाउ? Tom Robinson is actually innocence. He is a black person. He is innocent man. He is not guilty of raping Myla. That's why he is innocence. He is innocent. And over this innocence, the characters are, we can say that the society is divided into 2 parts. One is good and one is evil. One who is good is supporting the innocence or the innocent character, and the evil is not supporting the innocent character or is against the character or innocent character. तो सिंपल सी कहानी ऐसे समझिए कि बॉब रॉबिन्सन इनोसेंट पर्सनालिटी है, या फिर जो मॉकिंग बर्ड है इज एन इनोसेंट पर्सनालिटी. And on one hand, the protagonist of the novel is Scout, 2 other children, her elder brother Jem and friend Dill, along with his father and the cook, the maid California. ठीक है, are the representatives of good. And not only these much, but including them in good characters, Boo Radley and the Sheriff. क्यों? कहानी पूरी समझिए, क्यों इनको हमने गुड कहा, कौन कौन से कैरेक्टर के नाम एक बार फिर से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए. तीनों बच्चे कौन कौन? स्काउट, जेम, डिल. तीनों बच्चे, उनके फादर कैलिफोर्निया, 5 हो गई. बू रैडली एंड बू रैडली के बाद एक कौन बचा? शेरिफ. ठीक है, ये 5 जो हैं मेजरली क्या है? दीज आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गुड इन द नॉवेल. हाउ? बिकॉज दे आर डिफेंडिंग द इनोसेंट, दे आर सपोर्टिंग द इनोसेंट. मतलब जो इनोसेंट पर्सन है, जो कि क्रिमिनल नहीं है, जिसने क्राइम नहीं किया है, उसको बचाने की कोशिश में है, डिस्पाइट ऑफ
his skin color, despite of his being negro, despite of his being colored, despite of being black. तो वो रंग भेद, जातीयता आदि चीजें नहीं देख रहे हैं, जस्ट दे आर डूइंग फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी एंड दे आर सपोर्टिंग द इनोसेंट. कैसे कैसे सपोर्ट करते हैं ये देखिएगा. स्काउट, जिम, जेम एंड डिल are continuously to support their father, the lawyer, Mr. Atticus. They are trying to save and to be provide justice to the convict man, to the accused man, Tom Robinson. When a mob was gathered there to lynch Tom Robinson, the three children, along with Atticus Finch, reached there, defend them, and scout dispersed the mob by recognizing one of the man among the mob who was the father of one of her classmate. उनमें से उसकी क्लासमेट का एक फादर था, उसको पहचान लेती है और उससे बात करने में फिर भीड़ धीरे धीरे वहां से डिस्पर्स हो जाती है. ठीक है, तो बचाने का काम कर रहे हैं, तो ये गुड है. ऑन द अदर हैंड there is evil powers and evil characters, just like first of all our daughter and father, Bob Evil and Myla Evil. ठीक है, Bob Evil and Myla Evil both are the main representatives of bad or evil characters. We can correlate the words evil and evil. There is word evil in the name of both characters, Myla and Bob, and their surname is sounding like evil. It means, it seems that writer wants to reflect evilness in their name. So these two are representatives. Why these two are representatives? Just to protect his false things, just to protect his false image. Bob Evil falsely convict the man who was fully innocent, and the girl who herself was indulged in a consensuous sex with Tom Robinson, after being caught by her father, accused the man for rape. And all these things was just for false image and just for racism and injustice of that is based on race. These two characters are not only characters that represent evil. In the society, almost all the white persons, except some who are representing the good, are representing bad, representing evil, because they are against Tom Robinson just only for his color of skin. The jury members, the court who was on the decision, despite of being presented lot of evidences in favor of innocence of Tom Robinson, the jury convicted and pronounced sentence. They announced Tom Robinson guilty, despite of all the proofs that were presented by the lawyer Atticus. एटिकस ने सारे प्रूफ्स प्रेजेंट किए, बट ज्यूरी ने क्या किया? ज्यूरी ने सारे प्रूफ टॉम रॉबिन्सन के फेवर में होने के बावजूद भी उसको गिल्टी करार दिया. क्यों? बिकॉज ही इज ब्लैक मैन एंड ऑल द ज्यूरी मेंबर्स, जजेस आर ब्लडी रेसिस्ट. They were prejudiced about black skin, and this is the existence of evil. And the whole novel, good and evil, runs parallelly on the both side of innocence.
we can compare this novel like a river in which the water of innocence flows between the two banks of good and evil. बात क्लियर है? तो एग्जिस्टेंस ऑफ गुड एंड इविल हमने समरी से ही निकाली. समरी में क्या था? समरी पूरी कहानी हमको पता है, तो कहानी में हमको ये भी पता है कि ये जो 5 कैरेक्टर थे वो उस इनोसेंस को सपोर्ट कर रहे थे. बंदा इनोसेंट था, उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे. और हम लोग ये भी नॉवेल में देखते हैं कि लॉट ऑफ व्हाइट पीपल आर अगेंस्ट टॉम रॉबिन्सन जस्ट ओनली फॉर दे आर प्रेजुडिस्ड ऑफ ब्लैक स्किन. They consider that black men are born sinners, born evil. That's why they are accusing the man of rape, though he was innocent. तो वहां से कहानी से हमने क्या निकाला? गुड कैरेक्टर्स निकाले, इविल कैरेक्टर्स निकाले, इनोसेंट कैरेक्टर निकाला. एंड नॉट ओनली दिस मच, द कैरेक्टर ऑफ बॉब एविल is bloody evil. Why? Despite of the sentence, the imprisonment of the man Tom Robinson, Bob tries to attack on the children, Scout Tom and Scout Demon Dylan Jim. He was killed. अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि हाउ शरीफ एंड हाउ बू रैडली इज गुड, दे आर नॉट सपोर्टिंग देम. एक्चुअली बू रैडली इज very secluded person. He is not appeared in the society. Even very few people has seen him before. But he is actually good. He loves children. He tried to show his compassion to children by giving them some gifts, by saving Scout from the fire, by saving Scout Jim and Dill from the attack of Bob Evil. Not only this, the sheriff saves Jem and Boo Radley from the murder charge of Bob Evil because he knows that Bob Evil is wrong. He is evil person actually. That's why these characters are good characters and others racists are bad characters or evil characters, and Bob Robinson that is symbolizes as the mockingbird is innocent person. क्लियर है? तो एक थीम उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी. आ गई है तो जरा कुछ दिखा दें, हाँ ना कुछ बता दें, तब तक हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन. मॉरल एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन. ठीक है, मॉरल एजुकेशन का जो इंपॉर्टेंस है दैट reflects through four characters who the 3 children and father. ठीक है, तीनों जो बच्चे हैं और father is always giving moral education to the children. Atticus is giving moral education to children. आ गई है तब क्या दिक्कत है? लिख लेंगे ना. ठीक है, तो यहां पर शुरुआती हिस्सा आप नॉवेल का देखेंगे तो दैट इज प्रोमिनेंस ऑफ द चिल्ड्रन. ठीक है, 3 साल की कहानी है तो शुरुआती हिस्से में बच्चों की कहानी, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड इन द होल नॉवेल, होल नरेटिव, द फादर ऑफ स्काउट एंड जेम, लॉयर एटिकस, try to teach lot of morals to the children, Jem, Dill and Scout. And at the end of the novel, the moral of the story and importance of
moral lessons is established. जब कहानी खत्म होती है, कहानी खत्म होने के साथ जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो एस्टैब्लिश होता है कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन है वो कितना जरूरी है, ये बात नॉवेल के एंड में होती है. बिकॉज ऑल दोस टीचिंग्स दैट हैव बीन गिवन बाय एटिकस टू द चिल्ड्रन was remembered by the narrator Scout at the end. When she along with Dill and Jim were saved by Boo Radley, whom they consider bad one, and their moral education that do not judge a book by its cover, just try to see the word from one's views, one's eye. दूसरों की आंखों से जिसको आप जज कर रहे हैं उसकी आंखों से दुनिया को देखने की कोशिश करें. Then you will stop hating others. You will find that they are so because they should be. लोग ऐसे हैं because उन्हें ऐसा होना पड़ रहा है, ऐसा होने की उनको जरूरत है. This is the importance of moral education that prevails in the whole of narrative, because this is a kind of novel that can be considered as a Bildungsroman, that is coming of age novel. That is, in such novels the main character is developed in due course of the novel as a personality. And in this novel the main character, Scout, who is a girl of 6 years, develops into a personality within the narrative after 3 years. 3 साल का जो नैरेटिव है उसके दौरान वो जो स्काउट है, बीइंग अ चाइल्ड ऑफ ओनली 6 years, appears as very strong character. The novel builds the character of Scout, and this character building involves lot of moral education, lot of things. 2 हो गई. तीसरी की बात करें, सोशल क्लास. अभी तक जितना डिस्कशन हम लोगों ने किया, दैट इज डिस्कशन ऑफ स्पेशली एक्सपीरियंसेस ऑफ गुड एंड इविल, यू हैव फाउंड डिवीजन इन द सोसाइटी. द मेजर डिवीजन वाज ऑन द बेसिस ऑफ कलर, व्हाइट एंड ब्लैक. Blacks are not allowed to join the churches of white people. जो white people थे उनके churches को join करना allow नहीं था. And they are considered as bad one. उनको बुरा consider किया जाता था. They were living in prejudiced white society. Means there is social classes. One class is prejudiced white society, the other, that is innocent and humble class of people who are black in skin, but they are very humble people. They know that society and world needs love. Black people welcomes the 3 children in their church, and when there was a court scene, when the trial was going on, there was no space to sit in the white balcony. Then the 3 children, Jem, Scout and Dill, was invited by the black father of church to sit in their gallery and attend the trial. कहानी वही है. उसी कहानी से एक हिस्सा मैं निकाल करके समझा रहा हूं कहां से सोशल क्लास का आइडिया आपको मिल रहा है. One is white class, the other is black class. White is considered as upper, higher, while black is considered as bad one, wrong one, evil one. But they are actually innocent and good people. Not only these 2 classes in the society, but there is another class also who, being white, are very humble to law, very humble to white people, sorry, black people. तो व्हाइट्स में एक कम्युनिटी ऐसी भी है, एक ग्रुप ऐसा भी है, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं
who thinks for the equality, who thinks that they should treat equally the black people. And these includes the characters like Boo Radley, like Serif, like Atticus, like the three children. And this is the main three classes of the society that is presented in the novel. Actually, there is only two classes, white and black, but there is another third class that is considered as very humble class, who believes in equality and who has very uh, humble behavior for the black people. हाँ, मिस कैरोलाइन के साथ भी एक कुछ इशू हुआ था। चलिए उस स्टोरी पर हम लोग आगे आएंगे, ठीक है। अभी पहले इन जो ये थीम्स हैं इन पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अगर रह जाएगी तो इसकी जो मिस कैरोलाइन है उनके साथ जो है जो स्टोरी हुई थी एटिकस की, उसको थोड़ा सा हम ब्रीफ में डिस्कस कर देंगे। अगर आज नहीं पूरा हो पाएगा तो कल कर देंगे, आज समय बचेगा तो एंड में आज ही कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सोशल क्लास। सोशल क्लास के बाद नेक्स्ट है रेशियल इनजस्टिस। रेशियल इनजस्टिस, द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द fictional place Macomb, because the novel is set in Macomb in Alabama. Macomb is a fictional city. Actually this city is not exist, do not exist, ठीक है। ये सिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं नोट कर लूं। मिस कैरोलाइन एपिसोड, ठीक है। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? That is racial injustice. Judicial system is actually prejudiced system here in this city, because the trial that is presented in the novel is trial of black man, and the society is divided into two groups, two classes, that is black and white. And white consider themselves as upper and greater than black people. And in the trial, lot of evidences has been presented and proved that Tom Robinson is innocent. And actually guilty are Myla Evil and Bob Evil. But opposite to the reality, Tom was accused guilty and punished. And when he was trying to escape from the jail, he was shot 17 bullets and killed. And this is the injustice based on racial system, based on color of skin, based on white and black situations, ठीक है। ये व्हाइट एंड ब्लैक की वजह से, एक रेस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, रेस की कम्युनिटी की प्रॉब्लम की वजह से देयर वाज इनजस्टिस इन द सोसाइटी ऑफ मैकॉम। मैकॉम की जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में इनजस्टिस इसी वजह से है बिकॉज की there are two class of people, black and white, and there is injustice in law. And with this case, Atticus has shaken his faith in law. जो ये आता है, इसमें जो जजमेंट आता है, जिस तरीके से ये केस सुना जाता है, तो इसमें जो लॉयर है मिस्टर एटिकस, उनका लॉ पर से फेथ उठ जाता है कि कानून से भी सही मदद मिल सकती है, कानून भी सही निर्णय दे सकता है, पॉसिबल नहीं है, और उनका भरोसा उठ जाता है लॉ इज आल्सो प्रेजुडिस्ड हियर। इसी के साथ आप लॉज रिटन एंड अनरिटन भी आप समझ लीजिए। देयर आर आल्सो डिस्कशन ऑफ
or we can say that a hidden discussion of laws. That is, laws are the rules that is legislated, that is accepted as written rules, written laws. On the basis of that, judgment should be pronounced. But there are some unwritten laws, that is actually prejudiced things, prejudiced ideas by the white people. Actually, the written law is equality, equality of white and black. But at the same time, there is another law in practice that can be considered as unwritten law. And this unwritten law is actually that black people are really guilty. Black people are criminals. Black people are bad ones. This prejudice is actually the unwritten rule. And this unwritten rule victimize टॉम रॉबिन्सन. इसी अनरिटन रूल का जो विक्टिम बना वो टॉम रॉबिन्सन बना. क्लियर? कैसे? क्यों? Because there is a rule, that is white people are united against black people, and if there is any issue, the black people must be punished. These are unwritten rules. एंड बीच में एक मैंने दो हम छोड़ करके लॉज रिटन एंड अनरिटन पर आ गए थे. बीच में दो और बचा है, करेज एंड कंपैशन, जेंडर रोल्स. Courage and compassion and gender roles are both related to scout. First of all, courage and compassion. Scout, being a girl of only 6 years, has lot of courage in her. Not only she, her father Atticus, he also has lot of courage. And all these characters, means the 3 children and Atticus, all the 4 have sympathy and compassion for the black people. जो काले लोग हैं, जो नीग्रो लोग हैं, उनके लिए एक बड़ा कंपैशन, दया की भावना, और जो गलत है उसके खिलाफ लड़ने का एक करेज. Why this is considered as courage? Because the whole society was against Tom Robinson, but opposing his own community, opposing his own white community, and by facing lot of problems and abuses by the people of his own community, he supports the innocent man, that is Tom Robinson. ठीक है? He accepts the case of Tom Robinson because he thinks that he is not guilty, and he proves. But this is the drawback of legal system that is prejudiced and kills the innocent man. But there is novel full of courage and compassion for black people, compassion for underdogs, compassion for innocent people, and courage against the wrong, courage of fighting against the wrong. And the mouthpiece of this courage and the symbol of this courage is actually the 6-year-old narrator of the novel Scout. And gender role also relates with the Scout and another female character, that is Kalpurnia, and the third evil female character, antagonistic female character, that is Myla Evil. मेजरली अगर हम मेजर कैरेक्टर्स की बात करें तो ये 3 ऐसी फीमेल कैरेक्टर्स हैं जो नॉवेल में आती हैं. देयर आर अदर फीमेल कैरेक्टर्स आल्सो, बट जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है प्लॉट में, तो उनका क्या है कि ये 3 हैं. एंड जेंडर रोल्स ऑलवेज generally talks in matter of female, because
The discussion of gender role starts with the female rights. It starts with feminism. Without feminism, there was no gender role, there was no discussion of gender role. If we are talking of gender role, means we are distinguishing the role of women in the novel. And there are three significant female characters in the novel. One is a scout, who is, being only of 6 year old, is very intelligent, very courageous girl, who has played very important role in the novel and develops into a character, develops into a great personality. From the beginning, she begins as a child but ends into a personality. And California, being a black lady, she is mother-like figure for Scout. She is actually showing that courage to bring white children to black church. She is courageous and mother figure. She is exactly playing the role of a mother for these children from last 10 years. And last one is, that is loss of innocence. Actually, the symbol of mockingbird and Boo Radley and Tom Robinson. Actually, the mockingbird is a symbol for Tom Robinson, or is symbolizing Tom Robinson. And Boo Radley, all these three are just an example of innocence. And as novel develops and reached its climax, the innocence is ended. Innocence खत्म हो जाता है. कैसे? Innocence is ended because Tom Robinson was killed. Despite of being innocent, he is announced guilty and pronounced punishment, sentenced punishment. ठीक है? और बाद में भागते हुए उसको 17 गोलियां मार करके मार दिया जाता है. And Boo Radley, who is a very reclusive person, he lives in seclusion, has to come out from his house just to save children. He has very childlike heart. He is very pure person. He has love for children. And at the end, for sake of saving the children, he has to kill Bob Evil. And this is also the loss of innocence. And children are actually also the symbols of innocence and are very innocent in the beginning of the novel. But as they developed into a character, developed into a personality by the climax of the novel. नॉवेल के क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते ये जो बच्चे हैं वो एक कैरेक्टर के रूप में डेवलप होते हैं, एक पर्सनालिटी के रूप में डेवलप होते हैं. एंड देयर डेवलपमेंट इज एक्चुअली लॉस ऑफ इनोसेंस, बिकॉज नाउ दे आर नॉट इनोसेंट चिल्ड्रन, दे आर very intelligent and well couraged people. And this is the loss of innocence, and the novel carries the थीम लॉस ऑफ इनोसेंस इन द नॉवेल. सिंबल्स में यही 3 सिंबल्स हैं जिनकी चर्चा हम लोगों ने कर ली. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज और क्या बचा इसमें? कुछ एक दो छोटी छोटी बातें हैं, वो चाहे लिख लीजिए चाहे याद रखिए. दैट इज नरेटर कौन है? 6 year old चाइल्ड स्काउट. ठीक है, पहले भी बात कर चुके हैं. एंड द स्टोरी इज प्रेजेंटेड इन फर्स्ट पर्सन point of view, means the narration is by using I, because फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू क्यों होगा? क्योंकि स्काउट इज आल्सो द पार्ट ऑफ स्टोरी, इसलिए वो फर्स्ट पर्सन का यूज
कर रही है, एंड द होल स्टोरी इज नरेटेड इन पास्ट। टेंस जो है नरेशन का वो पास्ट टेंस है, एंड point of view is first person point of view, and the tone of the novel is very childlike, humorous and nostalgic, innocent tones that is presented in the novel. Childlike thing hai, here tragedy is presented in a very comic way. Actually this is tragedy, because Tom Robinson is tragic character who ends tragically despite of being innocent. The evil person, the villain of the novel, Bob Evil, is killed in a scuffle when he was attacking the children. ठीक है, तो ये जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है। सेटिंग की बात करें तो द नॉवेल डील्स विद द टाइम स्पैन ऑफ 3 years, लगभग पूरे 3 साल के टाइम स्पैन से इसका संबंध है, एंड द ईयर्स आर 1933 टू 1935। ठीक है, 1933 से 35 तक का जो लगभग 3 साल का समय है, 3 समर्स का जो है इस नावल में डिस्कशन है, क्योंकि 3 बार जो है दिल जा करके लौटता है। ठीक है, एंड आई थिंक हमारी तरफ से चीजें कंप्लीट हो रही हैं। एक यही जो क्वेश्चन अभी अभी मैंने नोट किया है, ठीक है, मिस कैरोलाइन का एपिसोड, इसको हम लोग कल चर्चा कर लेंगे इस पर, क्योंकि ये हमको स्टोरी थोड़ा सा और कोरिलेट करना पड़ेगा, उसको हम कोरिलेट कर देंगे, लेकिन आज नहीं, कल की क्लास में उसको कोरिलेट करेंगे। ठीक है, तो लगभग हमारे हिसाब से चीजें पूरी हो गई हैं। अभी आपके मन में और कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो उसको भी जरा सा पूछ लें। ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो अभी एक क्लास इस नावल पर हम लोग और लेंगे, इसके बाद फिर विचार करेंगे, या तो हम लोग स्टोरीज स्टार्ट करेंगे, और 25 तारीख है आज, 26 के बाद हमें लगता है 3-4 दिन की क्लास और मिल जाएगी। तो या तो स्टोरी स्टार्ट करेंगे, 1-2 स्टोरीज हम लोग पढ़ेंगे, 3 स्टोरीज पढ़ लेंगे, नहीं तो थर्ड पेपर का जो क्वेश्चन है, सॉरी कह रहे हैं, थर्ड पेपर का जो थर्ड यूनिट है टर्म्स का, उस पर डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रहेगा, और कोई क्वेश्चन अभी बचता है तो उसको आप लोग पूछ लीजिए फटाफट, उसे भी देखते हैं, अगर आंसर करने लायक होगा आंसर करेंगे, अदरवाइज उसे भी हम नोट करके कल की क्लास में इंक्लूड कर लेंगे। Just I'm waiting for your responses, whether are questions or no questions. Okay, thank you, welcome. Anyone else? Okay, so और इंतजार करना चाहिए। Can we say Bob Radley, Boo Radley also Mockingbird? नहीं, बू रैडली इज नॉट, मेरे हिसाब से वो मॉकिंग बर्ड नहीं है। ठीक है, ही हिमसेल्फ इज अ सिंबल ऑफ रिक्लूसिव पीपल, ऐसे लोगों का वो खुद सिंबल है जो बहुत समाज से कट के रहना चाहते हैं। ठीक ना, इसलिए उसको बहुत मॉकिंग बर्ड हमारे हिसाब से तो नहीं कह सकते। अब किसी ने कहा हो, किसी ने कोरिलेट किया हो तो अलग चीज है, मुझे नहीं लगता कि उसको मॉकिंग बर्ड, हमें जो मॉकिंग बर्ड का रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर लगता है, बिकॉज टॉम रॉबिन्सन इज हार्मलेस पर्सन, और दूसरे तरीके से देखा जाए तो बू रैडली भी उसी तरीके का है, हार्मलेस है, उसने भी कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बट उसको मारने जैसा यहाँ कोई काम नहीं हुआ। मॉकिंग बर्ड, टू किल अ मॉकिंग बर्ड, एक्चुअली जो किलिंग है, किलिंग एक ही की हुई, टॉम रॉबिन्सन की। ठीक है, इसलिए टॉम रॉबिन्सन को टाइटल से जोड़ना ज्यादा उचित है। एनीवन एल्स?
ओके, ठीक है, आज की क्लास यहीं तक करते हैं और कल कंटिन्यू करेंगे, और एक क्वेश्चन जो अभी और आया था उसी पर डिस्कशन करेंगे, देयर आफ्टर विल मूव अहेड। थैंक यू।